बांधे देश हमारा ये था बंधा, जिसकी गरिमा को छूले हर विदेशी ललचाया था। आज उसी भारत की आन बान और शान पर खतरा मंचाया। जी हाँ, आज सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत कुसंस्कार के अग्नि में तड़प रही थी, आजादी की उम्मीद में। अरे यह किसकी चीख है? यह गूंज सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, बल्कि रोती बिलखती एवं अंधविश्वास के जंजीरों में जकड़ी भारत माता की चीख थी। यह थी भारत की सच्चाई 300 साल पहले। सती प्रथा, जिसमें एक औरत को विधवा होने के जुर्म के लिए अपने पति के दाह संस्कार के दौरान समाज के दबाव की वजह से उसकी चिता में आत्मत्याग करना पड़ता था, और बाल विवाह, जिसमें 9 नादान बच्चों को आजीवन कारादंड मिल जाता था। जब भारत इन सामाजिक बीमारियों से जूझ रहा था, तब एक और बीमारी आ पड़ी, अंग्रेजों की बीमारी। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ସେହି ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରି ଶାସନ ଭାରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏକ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତଥା କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ପରିଚାଳନା। 1804 ଲୁଣ ଉପରେ କଠୋର କର ଆଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଉଠେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ କିମ୍ବା ଅମଳମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଶୁକ୍ଳ ଜମିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥକୁ ନିଆଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ତଥା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଯାହାକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ନାମିତ। साल 1857, जब उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था, वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियां, तब एक अफवाह फैली। ये अफवाह थी कि एनफील्ड को लोड करते समय जिस कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था, वह कारतूस गाय या सूअर की चर्बी से बनी थी। इसी कारण से मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अफसर तथा ह्यूगसन और बाग पर गोली चला दी, जिसके कारण उसे फांसी की सजा हुई। वह तो मर गया, पर पूरे देश को जगाकर चला गया। मंगल पांडे जैसे कई थे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या तोपे, कुनवार सिंह, नाना साहेब, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का डटकर सामना किया। अंग्रेज सरकार ने बड़ी क्रूरता से इस क्रांति को भी दबा दिया। India had made efforts to bring about independence once, but they had failed. Yet her soul did not slumber, and it rose again in the form of the non-cooperation movement, which was marked by the arrival of Gandhiji on the Indian political scene. The year was 1990. The Jallianwala Bagh massacre and the Khilafat issue cast a dark shadow over the Indian psyche. In this tumultuous backdrop, Gandhiji, a fervent believer of truth and non-violence, unfurled the banner of the non-cooperation movement. The essence was simple yet profound. Surrender British titles, boycott British goods, and the Swadeshi movement brought about by Gandhiji. This powerful movement put a tragic end in the form of the burning of 22 policemen in Chauri Chaura.
This marked the end as Gandhiji withdrew the movement. But the spirit lived on and it showed 10 years later. 10 साल बाद नमक सत्याग्रह यह हमारे देश की आजादी के और एक महत्वपूर्ण कदम था। महात्मा गांधी जैसे महान नेता के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन साबरमती आश्रम में शुरू हुआ और दांडी तक चला। इस आंदोलन में हजारों लोगों ने उनका अनुसरण किया और भारत की तटवर्ती शहरों में भारतीय राष्ट्रवादियों ने मिलकर नमक बनाया। यह आग थम तो गई मगर बुझी नहीं। करो या मरो का आह्वान फिर से गूंज उठा। इसी गूंज में कहीं न कहीं जय हिंद का नारा भी शामिल था। इसी नारे के गूंज ने लोगों को भारत छोड़ो जैसे आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर दिया। The year was 1947, a theater of liberation, of a nation which was burdened with a colonial rule, finally awoke with strength in her veins. Envision a nation teetering on the edge of a new era, where the saga of independence unfolds with each heartbeat. In the backdrop of centuries of colonial rule, a fervent desire for sovereignty swelled across the entire subcontinent. Countless visionaries like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru led non-violent movements that echoed the aspirations of a nation yearning to be free. The stroke of midnight on August 15, 1947 marked the birth of a nation, the birth of our India as an independent country, as millions celebrated the newfound freedom. The hallowed halls of the Constituent Assembly contained Jawaharlal Nehru's iconic Pressed with Destiny speech, a speech that captures the essence of the moment, that captures the future endeavors of the country stepping into a new era, an era of freedom. Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we make a pledge of dedication to India and her people and to the still larger cause of humanity. And this republic of ours was founded on the basic principle of the Constitution, a revolutionary one, rigid yet flexible, the father of whom is Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee. Indians had been under the thumb of a colonial rule for centuries, and their foremost aspiration was a choice in who ruled their lives, a choice in their government, under the principle of one man, one vote, and one value. This choice was provided in the form of the first general elections of India in 1951. People called it folly to hold an election in a country with barely any literacy and very few resources. But India did it. Due to challenging logistics, the election was held in 68 phases, but with a total of 1,96,000 polling booths, 30,000 of which were exclusively for women. India held the first elections, and the first voter of independent India was Shyam Sundar Nehi. India has also made revolutionary strides in the form of the conduct of elections. Now we have the electronic voting machines, a transparent means of voting which make counting much easier and faster. War is never desired, but in the crucible of 1947, two curdling nations were forced into conflict, a conflict which would later lead to three decisive wars. In the first of which, hearts were torn as two newborns searched for their identity, knowing nothing but violence taught by their previous colonizers. This is the Indo-Pak War of 1947. As the sun set on the British India, the partition had led to communal tensions and territorial disputes, with the princely state of Jammu and Kashmir being a focal point.
The situation had escalated with the invasion of Pakistani-supported tribal militias, and the United Nations took notice of this conflict and brokered a ceasefire in December of 1948. However, the war did not end with a ceasefire. This was merely the beginning of a conflict that would later continue in the 1971 Indo-Pak War. भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध के कारण शुरू हुआ था, जब पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के स्वतंत्रता के संघर्ष से उत्पन्न हुआ था। जब पाकिस्तानी सेना ने बंगाली आबादी पर कार्रवाई की तो बड़े पैमाने पर अत्याचार और शरणार्थी संघर्ष पैदा हो गए। दिसंबर 1971 में भारत ने हस्तक्षेप किया, बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन किया और युद्ध के 2 सप्ताह के बाद भारत ने विजय हासिल की। 16 दिसंबर 1971 के पाकिस्तान के पूर्वी कमान के आत्मसमर्पण के साथ आकार लिया एक नए देश ने, बांग्लादेश। मई से जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में आतंकवादियों ने घुसपैठ की। भारत ने चोटियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। गहन लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भारत ने जुलाई 1999 तक घुसपैठियों को पीछे छोड़ दिया। इस संघर्ष ने पर्वतीय युद्ध में नया को उजागर किया और भारत पाकिस्तान में तनाव का जन्म हुआ। यह युद्ध था जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त किया।